Hi Tejas, good morning and welcome on YourPedia. Good morning, sir. Okay, and Tejas, you are presently doing your master's M.Tech in space engineering, space technology. You are doing M.Tech from prestigious IIT Indore, and you are a graduate in electronics engineering. So तेजस, I would like to interact with you और आपसे information लूंगा कि कैसे आपको ये डोमेन मिला, ब्रांच मिला, क्या आपका स्कोर था, कैसे कैसे ये हुआ और कैसा ये प्रोग्राम है, सो दैट जो स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिले या जो इसमें जाना चाहे उनको अच्छा डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। सो मैं बैकग्राउंड आपसे स्टार्ट करता हूँ तेजस, आप प्लीज बताएं आप कहाँ से हैं और आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। मे बी आपके जूनियर आपसे कनेक्ट होना चाहें। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और उसके बाद आपने क्या किया और आपका गेट की जर्नी किस तरीके से रही, सीजीपी आपका कितना था कॉलेज में, एंड देन वी गो फॉरवर्ड। Okay, sir. So hi, my name is Tejas and मैंने मेरा B.Tech पुणे से किया है। पुणे में एक कॉलेज है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके। सो वहाँ से मैंने B.Tech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है एंड मेरा CGPA was 8.03. हम्म। Then thereafter I was a bit focused on going abroad for like in US. I wanted to target the VLSI industry. And I had even given GRE and TOEFL and had got excellent marks there. But there are some circumstances which we can't avoid. So I had some medical complications at home. So then I had to divert my attention to GATE exam because I was the only child. So that is one of the problems some students might also be facing. Yes, Uh, so then through GATE exam, then I've realized that yeah, our IITs are also no less than what the universities are abroad there. true. Yeah. So then after like I didn't get the marks that I was expecting in GATE, but though the marks I got were enough to like get me today here in IIT and experience what IIT is here today. So my marks were like to be fair, my marks were very less. They were 288 out of Okay, yeah गेट स्कोर। yeah GATE score. GATE score ओके। was 288, ओके। and but the thing was, the branch that I got here, they were not solely concerning about the marks that you got, but it was more based on the interview that you gave. They analyzed what you have done in the past, what skills that you are showing, and the research work that you want to do when you will be given a position to attend the coursework here. Uh, yeah, so in general, yeah, that is the story right now I have. But after coming here, previously I didn't have that much knowledge about IIT. It was just whatever there was in the media and all. But after coming here, I realized that IIT is not just the education that we say. IIT is what the facilities that you get. IIT is like blind facilities. You can imagine to do anything that you want. You have labs which are of the level of international universities, sorry. And like even the lab I'm in currently, uh, we call it as the Stark lab. It's RF lab, and the lab itself is worth in crores. So we have equipment from all over the world there, and we have some good people working on it. And there's a nice environment here where the people from PhD, B.Tech, M.Tech, MSc, even MS people work together on certain projects. So it's not like if somebody is conflicted that I might be going for this program or I might be going for that program. Because in IIT now they have adopted a culture where all of them come together to study some common courses. And as I've also seen from this semester, as the new education policy has been implemented, uh, B.Tech people also are able to attend our own electives. So there's a we can say a mixed pool of people who can work together or mix like share their knowledges together. So I think that IITs are now evolving more. गुड। Yeah. अच्छा तेजस, मैं दो तीन बातें इससे पूछूंगा आपसे। आपने बताया कि 288 गेट स्कोर आपका था और आप Yes. इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो डिड यू चूज इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड आल्सो और व्हाई यू चोज स्पेस इंजीनियरिंग एट द फर्स्ट प्लेस? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ट्राई किया या जो आपका मेन डोमेन है आपने वीएलएसआई बताया? Yes, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ट्राई किया and I did travel half of India for that. ओके। So
Yes. Now, as you know, 288 is a very low score for even electronics, and VLSI is a top branch that it is in Mm-hmm. demand today. Mm-hmm. So I did travel to first IIT IIT BHU. Mm-hmm. There they had called for uh, in-person evaluations. Then I went to IIT Dharwad for MS in VLSI. I Mm-hmm. gave an interview there. I Mm-hmm. even went to IISc Bangalore for an interview on in MTech research. That is which branch? That was on nano devices. Okay. Mm-hmm. So I had some conflict because I couldn't get more options as my degree name was only electronics engineering. It was a precursor in my college, precursor to electronics and telecommunications. So we had two branches in our college. So electronics engineering was the first one which came. So due to that name nomenclature, I didn't get more options in IIT. That is also one of the things that students have to be aware of, like what their Mm-hmm. degree is being named, because they have certain filters in their Mm-hmm. system. Even I went to IIT Kharagpur also, Mm-hmm. where there also the nano devices branch was there. So there also I gave interview. So I did cover half, like almost travel to half of India for that. You need to travel India because opportunities वहां से explore होती हैं Yes, तेजस, as you said. yes, And through this I would like to request all the students now, for this gate exam will be over, so they should get mentally prepared. अभी मैंने क्या देखा कि कोविड से क्या हुआ तेजस, स्टूडेंट्स डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर होम्स, दे वांट कि नहीं yes, घर में जो इंटरव्यू हो जाए दे मेनी टाइम दे आस्क मी कि सर मैं यहाँ से केरला से हूँ और मेरे को कानपुर जाना है और ऑफलाइन इंटरव्यू है, तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, समथिंग लाइक दैट दे आस्क, एंड आई से yes, you should go actually, because that is what we used to spend months together in the trains only when our time used to be yes, there, एक इंटरव्यू ये वहां जाते थे. So that is good, that is not bad. अब दूसरा तेजस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि आपको एमएस, जिसको एमटेक रिसर्च भी बोलते हैं कई जगह पे, yes, तो आपको एमएस से कॉल आया था वीएलएसआई से, फ्रॉम आईआईटी धारवाड़, एंड आप yes, sir. 8 सीजीपीए है आपका और 288 गेट स्कोर है आपका Yes, इलेक्ट्रॉनिक्स में. sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि एमटेक रिसर्च और एमएस से कॉल्स आने के चांस हैं, अगर गेट स्कोर कम भी है लेकिन सीजीपी अच्छा है तो एमएस से कॉल आता है. मैं आता आपसे है. जानना चाहूंगा कि आपका धारवाड़ का एक्सपीरियंस कैसा था, वहां इंटरव्यू हुआ था आपका? या यस, मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे. सो यस, मेरा एमएस जो एमएस का इंटरव्यू था धारवाड़ में, दैट वाज जस्ट आफ्टर आईआईएससी बैंगलोर का इंटरव्यू. सो आई वाज आल्सो बिट इन अ बिट ऑफ हरी, बट आईआईएससी बैंगलोर में जो इंटरव्यू हुआ था, दैट हम्म. गेव मी एन इनसाइट कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जा सकते हैं इफ द प्रोफेसर्स वांट टू गो टू अ हायर लेवल. So then I was a bit prepared for the questions. हम्म. So when I went there, the I real like for the first day, the seniors there, so हम्म. they called me. I interacted with them, saw their labs and all, and got an overall view like how the branch is progressing, the whole department is progressing in which direction. So that gave me an insight to what kind of questions that they can ask. हम्म. And I was more prepared to go into the digital domain. And हम्म. even they asked me like why digital domain, and because most of the work there was being done on in mixed signal ICs, and yeah, even they are right, because mixed signal ICs is something which is a bit important topic right now in VLSI industry as well, because from our phones to our computers, everything is based on mixed signal ICs. हम्म. uh, then yeah. So, like the questions they asked were quite fundamental, and like how, like what is a inverter, or how do you characterize it? Like then your capacitances are there, and a bit of more on the device modeling part. And like they wanted to go in deeper, but they said like we don't have that projects allotted in digital domain that you want here, but if possible we'll get back to you. हम्म. So that was what they said. हम्म. And but the professors there were good, very cooperating, and it's not like the interview you will be like getting scolded at the interview. No, they will guide you to the answer. You just have to follow it step by step. हम्म. आईसी में कौन से डिपार्टमेंट से आपने बताया दैट वाज नैनो टेक्नोलॉजी?
आईआईसी में था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में था वो। आई नैनो कुडंट टेक्नोलॉजी, सिट, यस, नैनो डिवाइसेस। नैनो डिवाइसेस, ओके। सो तेजस, आईआईसी में कितने डिपार्टमेंट से कॉल आया था, कितने डिपार्टमेंट से अप्लाई किया था आपने? Actually, I had applied for three departments in IISc. Uh, हम्म I couldn't apply for MTech. हम्म This is- like my gate score was very low, and I was not qualifying for that. But for MTech research, as my CGPA was higher, the options were opening very fast for me because MS, I got more calls for MS than MTech. Like ऑब्वियसली। for आप yeah. बता सकते कहाँ कहाँ से कॉल आया था आपको एमएस में? So I got call from IIT Jammu, I got call from IIT Mandi, I got call कैन यू from प्लीज IIT टेल अस Guwahati. आल्सो डिपार्टमेंट आल्सो तेजस, Yeah, आईआईटी sure, जम्मू sure, में कौन सा sure. डिपार्टमेंट या? Uh, IIT Jammu mein I got a call from electrical department only. I think that I'm not a bit clear about it, but yes, there. दैट वाज IIT एमटेक Mandi. रिसर्च एमएस। Uh, wait, no, yeah, that was MS. Then IIT Mandi, I had got uh, one was MTech in control system that I had got there. And MS was also there, but I'm not exactly remembering the branch for that right now. IIT Guwahati, I had got MS for robotics, disaster management, sustainability, and even in there was one, yeah, yeah, these three, दिस थ्री इन आईआईटी गुवाहाटी या? yeah, IIT Guwahati, एंड and दैट these वाज were in the आल्सो last ऑफलाइन? moment. दैट वाज आल्सो इंटरव्यू? That was interview, but in person you have to go to Guwahati. इन ठीक है। Yeah. और बाकी जगह पे आपका जो हुआ था धारवाड़ वगैरह में, दैट वाज Yeah. ऑनलाइन इंटरव्यू? No, no, those were also in person. The only online interview I gave was for IIT Indore, MTech, MS in astronomy department, space department, and MS VLSI in electrical department. तो खड़गपुर जो आपने गुवाहाटी जो आपने बताया, वहां तो अच्छे डिपार्टमेंट से कॉल आ गया था आपको तेजस? दे वर गुड डिपार्टमेंट्स, राइट? Yes, yes, yes. But हम्म then it was like I wanted to go towards the electronics field only. I didn't wanted to deviate. I did like thought of let's have some backups, but if I got some branches then that I wanted, then I'll be pursuing those only. डिड यू अपीयर फॉर इंटरव्यू देयर? No, actually the call for interview came in the very last moments. So that was I can say round one के करीब ही आया था call वो. And in राउंड the वन round ऑफ one only. सीओपी? Yeah, round one of the CAP. तो And दैट वाज तो स्टार्टिंग ओनली? yeah, that was starting only, and it was getting a bit hectic for me, because that was conflicting with other interviews also. And तो in IIT Indore only, I got in the round one itself, I got call for both MS in space sciences and MTech in space engineering in the first round itself. I got अच्छा both the तेजस, options. एक एक डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। ये जो स्टूडेंट्स का गेट्स को थोड़ा कम होता है जैसे, और लेकिन सीजीपी अच्छा होता है, 8+ Hmm, होता है, उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करो, अच्छे तरीके से hmm. प्रिपरेशन करो, अपना प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करो, क्योंकि एमएस से कॉल आएगा। लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि साहब एमएस बहुत अच्छा कोर्स नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि एमटेक, अब आप आईआईटीएन हो, आप आईआईटी स्टूडेंट हो, आप आपने दोनों चीजें अब देखी हैं, आपका वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू वगैरह देने में। एमएस कोर्स और एमटेक कोर्स के में क्या डिफरेंस बताते हैं आप, कि क्या जो स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को एमएस नहीं करना, मेरे को Hmm. एमटेक करना है, हाउ डू यू टेक दिस ऑल? So MTech is where you learn a lot of different subjects, and MS is where you focus on a singular subject. हम्म So MS is more research oriented than MTech. MTech हम्म अच्छा है if you want to explore your field more before going हम्म into a PhD. MS हम्म is good enough. MS is the option where you have realized कि तुम्हें एक ही टॉपिक पे तुम्हें रिसर्च करना है आगे जाके, एंड यू वांट टू स्टार्ट रिसर्चिंग राइट नाउ. MS वालों को सब्जेक्ट्स कम रहते हैं IITs में, so only the first semester is now in IIT Indore, only the first semester is your MS course work, and उसके बाद 1.5 years is entirely for project work, हम्म and where the faculty also supports you to publish papers. So in हम्म some IITs, yeah, that is a criteria for MS, because you have to publish a paper before you get a degree. But it happens 1.5 year is more than enough to do the publishing work. For MTech, that is not.
a load to publish a paper. You have to Hmm. do your MTech project work, and which is much easier than MS, I would say, because Hmm. even people have to know that uh, MTech is a bit easier than MS, but MTech carries more coursework than MS. अच्छा, मेरे को ये Yeah. बताओ, जॉब के हिसाब से बताओ और करियर के हिसाब से बताओ तेजस, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो वो होता है ना, वो होता है Yes. प्लेसमेंट इन जॉब, उसके हिसाब से बताओ बस, एमएस और एमटेक। उस आई विल से दिस ये ब्रांच टू ब्रांच थोड़ा डिफर करता है, बट हम्म। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि तुम्हारा रिसर्च क्या है। हम्म। अगर तुम्हारा रिसर्च तुम्हारे कोर कोर जो सब्जेक्ट है उसके कोर पार्ट में अगर है, then हम्म। I'm sure there is a company which will pay highly for you in their R&D department. Because हम्म। there has been a trend now कि वो MS के बच्चों को ले रहे हैं, and MS हम्म। बच्चे preferred है इंडस्ट्री में हम्म। ज्यादा। ओके। If we see, if we see in perspective of electronics industry, then MS, we have MS in VLSI here. So MS in the people from MS in VLSI are like the MS in electrical department are getting preference over normal MTech people because their research is of that critical level. That shows the aptitude. Okay. So Tejas, you mentioned that majority of the MS program will have interview उनका एडमिशन के Yes. लिए। सो जैसे ही गेट एग्जाम खत्म होता है तेजस, और जैसे आपका गेट खत्म हुआ होगा तो आपको लगा होगा कि साहब मेरा अच्छा गेट स्कोर नहीं आया, एंड इसी में मेजोरिटी बच्चा जो है ना वो मोटिवेशन लूज कर जाता है कि मेरे को एक्सप्लोर क्या करना है, मेरा गेट स्कोर तो 400 से कम है, 500 से कम है, आई विल नॉट हैव अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। सो ये क्रूशियल टाइम वेस्ट हो जाता है 1-2 मंथ तक, जब तक उसको इंटरव्यू कॉल आता है। एंड आईएससी जैसे पहला है एक इंटरव्यू कॉल भेजता है Yes. वो, और पहला इंस्टीट्यूट होता है, अप्रैल वगैरह में उनका इंटरव्यू आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फरवरी से लेके अप्रैल तक लार्जली स्टूडेंट जो है फोकस नहीं करता तैयारी पे। आपका क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स को, और इंटरव्यू की उनको कब से स्टार्ट कर देना चाहिए और कब से उनको फोकस करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे, सब्जेक्ट्स पे, सो दैट द मोमेंट दे गेट कॉल दे शुड बी इन पोजीशन टू कन्वर्ट इट। Okay, so my first advice would be आप गेट का जो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो वो छोड़ो मत, क्योंकि यहाँ पे आके भी यू हैव टू स्टडी द सेम गेट फंडामेंटल्स अगेन. Those are very important in the even after doing MS or MTech, in the company interviews also they'll ask those same gate fundamentals. So वो fundamentals कहीं भाग के नहीं जाने वाले. And you just have like you have, अगर स्टूडेंट्स के पास है बीच में टाइम, थोड़ा रिवाइज कर लो. इट्स नॉट गोइंग टू लाइक इट्स नो लॉस टू यू. बट उसमें एक आपका लाइक द पॉइंट यू गेव वाज कि गेट होने के बाद, मार्क्स आने के बाद जल्दी जल्दी कॉलेजेस के शुरू हो जाते हैं एप्लीकेशन आना, एंड इट डज बिकम हेक्टिक, एंड बच्चे को लगता है अरे ये टॉप कॉलेज है, मुझे नहीं मिल सकता, मेरा स्कोर तो बहुत कम है, कोरा पे कुछ और लिखा है, रेडिट पे कुछ और लिखा है, मुझे नहीं मिल सकता. सो इवन आई वाज इन दैट काइंड ऑफ सेम स्टेट. एंड yeah, I'm thankful to Jitendra Tyagi sir. He kind of guided me well in this moment. So it's, if you have a good CGPA and if you have a right set of mind कि मुझे यही करना है, इसी field में करना है, then there are more MS opportunities, open up MS opportunities for those with good CGPA but low gate score also. And the professor is more concerned about what you know and what you will do than rather your gate score in these times. So those with low gate score can have good opportunities, very good opportunities. Wonderful, but you need to explore. Me, No, no, I'm saying students will have more options, but yeah, yeah, obviously yeah. they need to make themselves, as you They said, I need to only explore. half, Like, हाँ मतलब मैंने आधी आधा कंट्री मैंने विजिट किया, वो जरूरी है, करना पड़ेगा वो। I mean, other country, I got 10 calls, but the big board that I had filled my options on, those post-it notes we have, right? सो मैंने बड़ा वाला में एक बोर्ड था जिसपे हम लिखते हैं विद दैट मार्कर. सो उस पे इतने पोस्टिट नोट्स लगा दिए, आईआईटीज के अलग, आईआईटीज में भी एमटेक का अलग, एमएस का अलग, इवन आईएससी बैंगलोर वगैरह सब. और इतना वो हो गया, द नोट्स आई हैड वाज अराउंड 100 एप्लीकेशन ऑलमोस्ट आई हैड फिल्ड, क्लोज टू 100. Every day I was filling it. It is exhausting. The students will find it exhausting. And बट आई टेल द स्टूडेंट्स कि अभी इतना कर लो, क्योंकि तुम्हारा साथ यही है. इफ यू हैव लो स्कोर, देन यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी, योर चांसेस ऑफ हैविंग द कॉल्स.
लाइक यू कांट गो बैक ऑन, मैं नहीं भरूंगा, मैं सिर्फ 2 4 भर दूंगा, क्योंकि इट्स ऑलवेज अ गेम ऑफ चांसेस इसमें, कि कभी कभी कॉल आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स विच विल बी फिलिंग द फॉर्म्स इज अ वेरी लार्ज पूल, वो पूल बहुत बड़ा है, सबको हम्म कॉल नहीं जाते, दैट इज ऑल्सो हम्म अ थिंग। दैट इज ट्रू। अच्छा तेजस, अभी यू दिस थिंग यू आर इन IIT इंदौर डूइंग एमटेक इन स्पेस इंजीनियरिंग। मैंने सुना है कि ओवरऑल आईआईटीज में, मैं जैसे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से, तो अभी जॉब मार्केट sluggish चल रहा है बिकॉज ऑफ रिसेशन। व्हाट इज द यस, सिचुएशन इन IIT इंदौर? थोड़ा स्लगिश है, बट द फंडामेंटल ब्रांचेस आर गेटिंग जॉब्स, आ ओके। रहे हैं, जॉब्स आ रहे हैं। मतलब जो रैट रेस पहले इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या कंप्यूटर की तरफ था, वो अब जो है कोर की तरफ भी आ रहा है, बच्चा जा रहा है कोर कोर में। के तरफ बहुत ज्यादा अभी फोकस बढ़ने लगा है, रैट रेस बाहर से दिखता है, बट हाँ। आईआईटी के अंदर आने के बाद जब इंटरेक्ट किया है सीनियर्स के साथ, तब उनका उनसे यही फीडबैक मिला है कि नहीं, कोर कोर का ब्रांचेस ज्यादा डिमांड में है। ओके। एंड द थिंग इज, हाँ, और इसका इफेक्ट भी दिखा है कोरोना का, कि कोर की ब्रांचेस में भी रिक्रूटमेंट कम हुआ है, ऐसा है, बट रिक्रूटमेंट चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा ओके। मतलब है, ऐसा। अभी जो स्टूडेंट है, जैसे अभी मैं आपको उन स्टूडेंट्स की बात बताऊं जो बीटेक कर रहे हैं कॉलेजेस में, उनको जॉब जैसे नहीं लगा है, तो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम दे कैन गो फॉर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन आईआईटीज एंड ऑल। और जब तक वो स्किल यस, लेके निकलेंगे, तब तक जॉब मार्केट दोबारा बूम करेगा और उनको अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ओ यस, डेफिनेटली दे शुड, आई थिंक, मतलब अगर टाइम है, देन रादर देन स्किपिंग ऑन टाइम, ये जो स्किल्स हम्म अगर ले सकते हो आईआईटी से, आईआईटी डिग्री का कुछ नहीं है, आईआईटी है तुम्हारा वो लैब एक्सपीरियंस, तुम्हारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस जो है, वो हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें या फिर जो टूल्स तुम्हें मिलेंगे आईआईटी में, वो कहीं और नहीं मिलेंगे तुम्हें, सही है। आईआईटी और आईएससी और आईएसएस फॉर दैट मैटर, हायर एजुकेशन में, यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो फंडिंग आता है, टू हम्म बी फ्रैंक, इट्स ब्लाइंड ब्लाइंड फंडिंग। तुम्हें अगर हम्म कुछ चाहिए, वो चीज नहीं है, और उसके बिना तुम्हारा रिसर्च नहीं हो सकता, वो लाखों की भी चीज हो, आईआईटी विल प्रोवाइड इट फॉर यू, प्रोवाइड यू, इट इज द बेस्ट ऐसा। पार्ट। हम्म यस, चलिए, दैट वाज वंडरफुल तेजस टॉकिंग टू यू। या, And that is the reason, Tejas, I feel like talking to people like you. I tell you honestly, friend, like lot of information. And as a teacher, as a mentor, we cannot even guide students if we don't have knowledge. And every interaction gives us so much information about the things. और आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट्स सुनेंगे वो उनको भी बेनिफिट होगा। एक और रिक्वेस्ट आपसे है, यू आर ऑलरेडी अवेयर, जैसे स्टूडेंट्स जब जाना चाहते हैं, वो आप जैसे लोगों को सुनते हैं तो आपसे इंटरेक्ट भी करना चाहते हैं। और योर यस पीडिया पे हम एक्चुअली, जैसा करवाते हैं, हाँ बोलिए। 1 मिनट, एक्चुअली कुछ बच्चे हैं जो लाइक फ्रॉम साउथ, दे आर कॉन्टेक्टिंग मी कि सर, आई एम फ्रॉम एरोस्पेस, मुझे हाँ आईआईटी इंदौर ही आना है, मुझे स्पेस इंजीनियरिंग ही करना है, क्योंकि हाँ यहाँ आने के बाद आई आई इम्प्रूव्ड ऑन माई लिंक्डइन ऑल्सो, बिकॉज दैट इज हम्म ऑल्सो रिक्वायर्ड अ लॉट, बिकॉज हम्म कंपनीज ऑल्सो सी योर प्रोफाइल्स ऑल्सो। सो वो हम्म इम्प्रूव करने के बाद कुछ ज्यादा ही व्यूज आने लगे, बच्चों से क्यूरियोसिटीज आने लगी, कि सर मुझे इधर जाना है, सर मुझे ये ब्रांच में जाना है, क्या, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। सो अभी डेली वो भी चल रहा है, कि बच्चों को वो भी बता रहा हूँ कि अरे ये ऐसा करो, दैट इज वो वैसा वंडरफुल। करो, या। नहीं, वो अच्छी चीज है, मतलब किसी के को बेनिफिट हो रहा है, दैट शुड बी डन। यस, एंड वो आपका एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईआईटी इंदौर, दैट इज योर या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था तेजस, कि जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू रूटेड होंगे भी और वो चाहेंगे आपसे बात करना, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनसे इंटरेक्शन करके उनको गाइड कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं श्योर आईआईटी सर, इंदौर में क्या क्या है, राइट तेजस? यस सर, यस थैंक यू सर, एंड ऑल द एंड वेरी बेस्ट या, फॉर। या वन लास्ट थिंग, आईआईटी इंदौर इज वेरी गुड इन वन थिंग, क्योंकि ये लाइक मुझे भी पता नहीं था, ये सिटी से इतना दूर है, इट्स नियर द फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इफ somebody डज वांट टू कम, अगर इंटरव्यू वगैरह होता है तो चांस मिस मत करो यहाँ आने का, क्योंकि दिस इज वेरी अवे फ्रॉम द सिटी, सो पूरा क्लीन एयर है, एंड वी डोंट गेट टू ब्रीथ दैट मच क्लीन एयर इन दिस एरा, दैट्स लाइक ट्रू। पूरा फॉरेस्ट एरिया है, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, पूरा स्टूडियस एनवायरनमेंट है, एंड द फैसिलिटीज हियर आर वेरी गुड, लाइक मुझे लगा था कि नेक्स्ट, कि नया आईआईटी होगा तो फैसिलिटीज में कुछ कम हो सकता है बट कंपेयर दे टू आर द टॉप वंडरफुल। 7 आईआईटीज। नो, बट दीज आर ऑन पार विथ इवन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, इतना अच्छा फैसिलिटीज है यहाँ पे, इवन आई वाज शॉक्ड बाय कमिंग हियर। वंडरफुल। So I चलो, hope students do come and explore IIT Indore. So yes, वंडरफुल। ओके, थैंक्स अ लॉट तेजस फॉर yes योर sir, टाइम। yes sir. Thank you sir.